Yes, so we'll start the session. Everyone, please come to a comfortable seated position. Yes, so for people who have joined for the first time, my name is Priyanka Negi and I'll be your instructor for this 5:30 p.m. session. Today, we'll start our session with a breathing exercise. Pranayam se start करेंगे. So we'll be doing Anulom Vilom, alternate nostril breathing. So there is one contraindication wherein you should not perform it. If you have severe cold, अगर आपकी nose पूरी blocked है and you are not even able to inhale, exhale properly, तो आप उसको avoid करिए. Just do your normal inhalation, exhalation. Others who can practice this pranayam, how we do it? We start with keeping our right palm in Pradam Mudra, जिसमें हम अपना thumb open रखेंगे, last two fingers open, middle two fingers will be folded and will be touching your palm. So इस तरह से अपने right hand को Pranam Mudra में लेके आएंगे. Then with the thumb you have to close your right nostril. That taking slow and deep inhalation from the left, closing left nostril, exhaling from right. Now let's start the Anulom Vilom practice. So right palm in Pranam Mudra, thumb open, last two fingers open, middle two fingers closed. Then close your right nostril with the thumb. Take a deep inhale from left. Close the left nostril, exhale from right. Now you can just relax your palms. Relax your breath. Bring it back to normal pace. Now you can gently rub your palms. Place your palms on your eyes, all over your face, and then open your eyes. Yes, so this is how we practice Anulom Vilom, alternate nostril breathing. Now we'll start with our seated body stretches. Today's session will be more focused on our lower body, अपने hip opening, pelvic opening पे काम करेंगे. So people who have joined for the first time या फिर first week है, first time session attend कर रहे हैं, do less of whatever asanas, whatever exercises we do. Now sit in a comfortable position again, bring your palms to the front. Yes. मैम मेरा ना 4 months में 9 kg लूज हुआ है वेट, बट मेरी लेग्स जितना चाहिए था उतना मेरा रिड्यूस हो गया है. तो अगर मैं और लेग की एक्सरसाइज करूंगी तो मेरा और कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं होता है. जैसे इट डजंट वर्क. मतलब फैट अगर ये unnecessary मेरा रिड्यूस हो गया, बट यहाँ टमी में रहता है मेरा ये ना टायर. ये एक्सरसाइजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैट को रिड्यूस करने के लिए है, हमारी स्टिफनेस को ओपन करने के लिए भी है, प्लस टोनिंग के लिए भी है. सो ऐसा मत सोचिए कि आपका और फैट रिड्यूस हो जाएगा, आपकी टोनिंग भी होगी लोअर बॉडी. यस यस. सो एवरीवन ब्रिंग योर palms in front. Let's do palm up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now make a fist and then do the wrist rotation. 1 2 3 4 and 5. Opposite direction. 1 2 3 4 and 5. Arms in line with shoulders and then palm up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax your palms on the knees. Now neck stretching करेंगे with inhalation neck up, exhalation neck down. 1 2 3 4 and 5. Now next side to side, right to left. 1 2 3 4 and 5. Come back to center. Now दोनों legs को straight करेंगे सामने. We are going to do ankle mobility and knee mobility. So दोनों legs को straight करेंगे, palms on the sides of your hips to keep your spine straight, and then toes stretched towards your body, away from the body. 10 counts का stretching करेंगे toes का. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now rotation, ankle rotation. 1 2 3 4 and 5. Opposite direction. 1 2 3 4 and 5. Now fold your one leg. Right leg को fold करेंगे. Hold the under thigh area and then leg up and down. 5 counts. 1 for the knee mobility. 2 3 4 and 5. Circles outward direction. 1 2 3 4 and 5. Very good. Inward direction. 1 2 3
4 and 5. Relax this leg, fold the other leg, दूसरे leg को fold करिए. Again, hold your other thigh area and then leg up and down. 1, 2, 3, 4 and 5. Outward direction circles. 1, 2, 3, 4 and 5. Inward direction. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax your leg. Now we'll keep our both legs in front of our body. इस तरह से दोनों legs को bend करके सामने लेके आएंगे अपने body के. Palms at the back side of the body and slightly leaning backward. Palms को अपनी body के पीछे रखेंगे, हल्का सा lean back करेंगे. And then you have to twist your legs. So legs को twist किया, one side, dropping legs completely down on the floor. Inhale center, exhale, dropping on the other side, windshield wipers. Let's start it with the countings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Come back to center. Now हम butterfly में आएंगे. So bring your feet together in front of your pelvic area. Join करिए अपने feet को in front of your pelvic area. Hold them with your palms. अपना spine straight रखेंगे, back straight. And then gently start flapping the legs. 1 everyone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax your legs. Now palms को रखेंगे अपने edges पे, knees से थोड़ा सा पहले. Then we are going to do rotation from the upper body so that we can gently massage our pelvic floor. So inhale center, exhalation के साथ इस तरह से upper body को rotate करेंगे. 5 circles, one direction, 5 in opposite. Let's start. Inhale in the center. Exhale, start making circles. 1, 2, 3, 4. Very good, everyone. Keep going. And 5. Opposite direction now. 1, 2, 3, 4 and 5. Very good. So swing करेंगे अपने दोनों arms को. Swinging up and down. Let's start. 1, 2. Slightly bend and start rotating. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right leg. 1. Left leg से करेंगे. Let's start. 1. Let's start. Right leg, everyone. 1. And start. 1, 2, 3. You have to stand at the center of the mat. Take your one leg to side. जो leg आप side में लेके गए हैं, उसका knee bend करेंगे. Touching your foot, coming back to center, and then moving to other side like this. 1. Inhale, center. Exhale, bend. 2. You have to firstly widen the distance between your legs. Feet pointing diagonally. Then with inhalation, raising both arms up. Exhalation के साथ going down to goddess. So this is your goddess pose. Hip width, feet pointing diagonally. Inhale, arms up, everyone. Exhale, sit completely down to Malasana. Instead of hunching your back, keep your spine straight. Spine को जितना straight रख सकते हैं, रखिए. 1, 2, 3. Exhalation के साथ bend towards your right side. So bend towards your right side. Right palm या तो shin bone पे या फिर ankle पे रखेंगे and hold. Straight. Keep your left arm also straight. Everyone, lie down on your back. Now we'll fold our right leg. Right leg को fold करके hug करेंगे tightly. Left leg straight. Along with the tightening of the leg, we'll do the ankle movement. Toes towards your body, away from the body. Hug your right leg and then do this ankle mobility. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and
chin. Release this leg, fold the other leg. दूसरे leg को hug करिए. Again, ankle mobility. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. From here, we'll go to Shavasana. Cool down करेंगे अपनी complete body को. So, loosen each and every part of your body. Close your eyes and relax completely for 1 minute in Shavasana. Join your palms in front of the chest, eyes closed. Take a deep inhale and deep exhale. Inhale again, and while exhaling, chant Om. Om. नोटिस कर रही हूँ आज जब नेक रोटेशन वाली एक्सरसाइज होती है ना तो लेफ्ट साइड यहाँ पे पेन हो रहा है. ओके, सो ये एक्सरसाइजेस की वजह से हो रहा है या फिर किसी और रीजन से हो रहा है या फिर आपको पता नहीं है? जब मैं वो नेक रोटेशन वाली एक्सरसाइज करती हूँ ना तो राइट साइड वाली तो हो जाती है लेकिन लेफ्ट साइड वाली पे यहाँ पे ना एक पेन होता है. ओके, सो दैट मीन्स आपके ना लेफ्ट साइड में कोई नर्व है जो ट्रिगर हो रही है. जैसे ही आप उस तरफ से रोटेशन करते हो तो वो ट्रिगर हो जाती है. उसके लिए ना आपको थोड़ा सा वहां पे जेंटली अपने पाम से हल्का हल्का मसाज करो. सो नर्व अपनी राइट पोजीशन पे आ जाती है. इट हैपन्स समटाइम्स नर्व्स हमारी थोड़ा शिफ्ट हो जाती है. तो उसको थोड़ा सा अपने पाम से थोड़ा सा सेटल डाउन करके एंड चाहे तो आप सपोर्ट के साथ भी रोटेशन कर सकते हैं. ओके ओके, थैंक यू मैम. Hi, ma'am. यस. थैंक यू. Yeah, hi. Actually, this is today is the my first session, so it was good. And my purpose is to reduce my belly fat. So if you can see here, so accumulation of fat is there. So will these exercises will help in it, or we need a separate set of exercise specially for this portion? So what would you suggest? Actually, yeah. So for belly fat, we do exercises on every Thursday. We work on our abdomen area only. So entire Okay. belly area, we work on that. But it's not that only belly exercises will help you to reduce this fat. You have to do the full body workout. Okay. Okay. So the Okay. classes are designed in such a way that we cover each and every part, be it your upper body, lower body, or your belly section. So we cover Okay. everything so that there is toning of the body. We don't want like some part of a body to be very thin and some part to be very thick. So it's just the toning of the body happens when we do the full body work. Okay. 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 Thank you. हेलो मैम एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैंने ज्वाइन किया था लेकिन मेरा स्टमक अभी तक इफेक्ट नहीं दिख रहा है मैम स्टमक पे. सो एज इट इज जैसे Stomach था है. वैसे ही है. Okay. When did you join? कब आपने 4 ज्वाइन months किया आए था? 4 months आए को. ओके, सी आपने यस अपना डाइट आप फॉलो कर रहे हो. बिकॉज क्या होता है ना कि बेली में लाइक बेली फैट इज वेरी रिजिड. उसको कम करने में इट्स नॉट लाइक आपका बहुत जल्दी आपको रिड्यूस होगा. इट्स द लास्ट पार्ट, लाइक लास्ट आपका वहीं पे वर्क होता है बेली फैट पे. तो डाइट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप चेक करिए कि आप अपना डाइट में क्या खा रहे हैं. बिकॉज डाइट सब कुछ खराब कर देता है चाहे आप कितना भी वर्कआउट करो. राइट. राइट. सो और मैम जॉ लाइन आप कह सकते हैं ये ज्यादा बढ़ गया है. सी दैट मीन्स अगर ये बढ़ रहा है, अगर आप वर्कआउट रेगुलरली कर रहे हो एंड आपका फैट बढ़ रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. एंड समथिंग रॉन्ग क्या हो सकता है? दैट्स द डाइट. बिकॉज वर्कआउट तो आप फुल कर रहे हो, अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो डाइट को चेक करो फॉर श्योर. एंड दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. उसको कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस ओके. मैम. थैंक यू.